अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी और मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सुंबल चौधरी। वी होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आए इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। वीडियो का नेम है वाई बांग्लादेश कैपिटल विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा बांग्लादेश के कैपिटल की काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो हमारे साथ पूरी देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, याद से सब्सक्राइब कर लें। फिर हमारा चैनल गुम हो गया तो आप कहाँ से ढूंढेंगे, और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप सबसे पहले वीडियो देखें जी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। This is Dhaka, the capital city of Bangladesh, and it is one of the biggest cities ever in the entire world. It is even called a megacity considering how big it is. Wow, several predictions have even concluded that Dhaka will be the world's largest metropolis by 2025, along with Tokyo, Shanghai, Beijing, Mexico City, and New York City. But what makes Dhaka stand out isn't how big, but how fast it grew and how important it's going to be toward the future. The country's capital is well known to be one of the fastest growing megacities. Its population more than tripled in the last 30 years, with 500,000 people migrating each year. This then turned Dhaka from a measly small city to Bangladesh's financial and commercial hub, accounting for 35% of the entire country's economy. This massive growth, however, is not all economically beautiful. When a city like Dhaka becomes so big, so fast, it often comes with challenges. It resulted in a city with varying problems, but some of the direst ones pose a threat to the overall livability and social inclusivity of the city. Environmental pollution, intense congestion, and poor urban services are just some of the many more problems. If all of these are left unattended, these problems would just end up becoming larger and larger, and one day become a massive issue in the future. Thankfully, however, these are being met with solutions. The biggest solution the government has initiated is the construction of infrastructure. It has always been known that the capital has been laggard in infrastructure developments. It was a major constraint to the very growth of Bangladesh. According to experts, the country's infrastructure global ranking from 2016 to 2020 stood only at a rating of 2.3 out of 10, which makes it one of the lowest in the world. But in the next 5 years, from 2021 to 2025, the ratings are expected to jump to 4.5 out of 10. These infrastructures will push the capital into becoming a world-class city, which will become a place filled with innovation and futuristic technology. Some of the biggest initiatives fueling the economy of the capital are in the transportation sector. As the capital continues to grow, transporting tens of millions of people every day becomes essential. If left alone, it will become one of the biggest bottlenecks to the economy, as traffic congestion are notorious for destroying economic activity. The biggest transportation master plan fighting these issues is the Dhaka-Chittagong High-Speed Railway, a 220-kilometer project that is expected to be one of the country's biggest plans ever in its history. It will carry at least 50,000 passengers daily and is expected to be finished by 2030. Furthermore, the cost of the project stands at a whopping $11.4 billion US. The expansion of its international airport has also reached a major milestone. The Hazrat Shahjalal International Airport will be constructing a third terminal, which will cost $2.5 billion. These costs will help push the airport's passenger handling capacity rate to over 20 million annually from just 8 million, making it one of the few big initiatives to help alleviate the congestions the capital is facing. As the economy grows further, the middle class of the capital grows as well, and demand for flights become the new norm for the people. Several more infrastructures are on the way, too much to mention in one video at least. In summary, the other bigger plans are the Dhaka Metro Rail, Dhaka Subway, and even energy power plants. These infrastructures will be the backbone of the rapid growth in the country. As it turns into a more transit-oriented place, the compact, connectedness, and resilience of the city and its people would further increase and result in much higher productivity rate and economic output, which then ends up resulting in further improvements to other types of endeavors.
As long as they do their part in transforming the city and its infrastructure, continuously combining different kinds of investments, then one day we will see Dhaka becoming a world-class economic major hub. Anyway, what do you think about Dhaka? Let us know your thoughts in the comment section below. Don't forget to leave a like and subscribe for more. जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। एब्सोल्युटली ढाका की वीडियो हम जब भी देखते हैं एक तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, और ये बात अब पूरी दुनिया मानने को जो है वो मानती है कि ढाका जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बन चुका है। मतलब इतनी ज़्यादा उसमें जो है वो ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट हो रही है, और बता रहे थे कि वो ट्रिपल टाइम्स जो है डबल हो चुकी है उसकी आबादी जो है, क्योंकि लोग जो हैं वो हर साल तकरीबन 5,000 कुछ, मुझे याद ही कितने इस तरह बता रहे थे। हाँ, पर मंथ या क्या कुछ ऐसे बता रहे थे कि लोग जो हैं वो ढाका जो हैं वो मूव हो जाते हैं। तो आबादी भी बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है गवर्नमेंट ने प्लान किया सिटी के लिए। और जो सबसे बड़ा वो बता रहे थे प्रोजेक्ट जो ट्रेन का है कि वो जो है बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक जोलची या बाशोन भी बताया उन्होंने, उस पर भी हमने रिएक्ट किया था पहले एक वीडियो में। तो बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग वीडियो लगी। तो फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त लगा जिस तरह बांग्लादेश गवर्नमेंट है वो बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो उस वजह से यहाँ लिवेबल नहीं रहेगी ये सिटी आने वाले वक्त में। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखा है और अभी से उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दिया। ढाका मेट्रो बना रहे हैं, रोड्स का नेटवर्क बना रहे हैं, और बता रहे थे जिस तरह सिटीज़ हैं, बीजिंग है, शंघाई है, उस तरह की सिटीज़ को बनाना वो चाह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाना चाह रहे हैं। तो बहुत सुन के खुशी हुई है कि एशिया में भी अब मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रही है। बता रहे थे एक पॉइंट कि 10% जो जीडीपी है ना वो ट्रैफिक की वजह से लॉस हो रहा है। ढाका में जो ट्रैफिक का इशू है, तो उसको उन्होंने सॉल्व करने के लिए 50,000 पैसेंजर्स को लेके जाएगी मेट्रो, और रोड्स का वो अच्छा नेटवर्क बना रहे हैं, मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, और जो जीडीपी उनका गिर रहा है उसको भी संभालेंगे और जीडीपी और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाएगा। और बिल्डिंग्स जो है बहुत ही वो हाई राइज थी, और मतलब बन भी चुकी हैं, और अभी और ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स हैं। तो ढाका इज़ ऑसम सिटी, बहुत ही जिस तरह जोलियाँ, बशौन, इस तरह के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, बांगा बंधु टावर्स हैं, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही हैं। सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो भी ढाका में ही है, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त लगा ये सब कुछ देख के हमें। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। ढाका तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है, उसकी जब मैंने वीडियोस देखी हैं तो वो तो और ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसके अलावा वो जो 3D में वो दिखा रहे थे वो बुलेट्स ट्रेन, और वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही इंशाल्लाह बन जाएगा। और हम लोग बहुत जल्द इंशाल्लाह ढाका देखने आएंगे। अगर ढाका से एक ट्रेन पाकिस्तान आ जाए डायरेक्ट, या पाकिस्तान से ढाका चले जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले हम बैठ के आएंगे उसमें। उसमें ये होगा कि आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। जो बांग्लादेश के कुछ लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं अभी भी, कराची में पता नहीं कितने लाख लोग हैं, और हम भी जाना चाहते हैं। तो इस तरह का इनिशिएटिव भी होना चाहिए कि कोई ट्रेन पाकिस्तान चले, जिस तरह पाकिस्तान से तुर्की भी ट्रेन जाती है। वी होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले ही कहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का जो है वो लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर हमें लाइक कर लें। और इसके अलावा मैंने अपना व्लॉग चैनल बनाया है, वो भी लाइक कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है। और आप वहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अपनी रिकमेंडेड वीडियोस बताने के लिए, और कमेंट्स में भी बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।